In this lecture, we will discuss the problem based on normal distribution. So first we recap this normal distribution. So basically the normal distribution, we draw the normal curve. So here we distributed the area in three sigmas, sigma 1 sigma, 2 sigma and 3 sigma. So for random variable x, we take as mu, when for z, we take as 0. So here we write down as x is equal to mu plus sigma for this side. So this is mu plus sigma, mu plus 2 sigma, and here is mu plus 3 sigma. Similarly, we write down mu minus sigma, mu minus 2 sigma, or here is mu minus 3 sigma. So z equal to 0, this side z equal to 1 sigma, z equal to 2, z equal to 3. Similarly, for z equal to minus 1, here z equal to minus 2, and z is equal to minus 3. So we have already discussed the area under the normal curve is 1. So total area under the normal curve is 1, which is distributed equally in both sides. So this 50% into this side and 50% into this side. So we can directly say the 0.5 into this side and 0.5 into that side. So now when we obtain the probability of mu minus sigma to mu plus sigma, random variable I. So this we can calculate it as with the help of integration. So mu minus sigma to mu plus sigma. So this is a function of x into dx. So when we convert it into the form of z, so then we can write down as z lie between minus 1 to plus 1. So here we take as z equal to minus 1 this side and this is plus 1. So this equal to integration of minus 1 to plus 1 into phi of z into dz. So phi of z into dz. So we see that the both side we have the symmetry. Same area we have positive side and same area we can take into the negative side. So or we can use, so this can be written as twice into 0 to 1 phi of z into dz. So this is 0 to 1 phi of z into gz. So this area, so that means we can take the value of z is equal to 1. So this value z equal to 1. So we can take the help of the table. So which value is 0.3413 approximately. So that's why we write down as 0.6826. 0.6826. Similarly, we can calculate for 2 sigma or 3 sigma. Now, we remember the thing that means integration minus infinity to plus infinity fx into dx, which is equal to minus 1 to function of x. So same as minus infinity to plus infinity phi of z into dz, which is also equal to 1. Now, we start the problems based on normal distribution. So first we take the simple problems. So that means we start the question number 1. So on a final examination of mathematics, the mean was 72 and standard deviation was 15. Determine the standard score of students. Standard score means we calculate the value of z. .
receiving the marks 60, 93, 72. So here just we do one thing, that means we have to convert these values into the Z score, Z value. So these are the random variable X values are X. Now we convert these values into Z. So we know that standard normal variate Z is equal to X minus mu upon sigma. So here mu is equal to given as 72 and sigma given as 15. So when we are going to solve the first part, so here X is equal to 60. Now we convert this 60 into standard score Z. So 60 minus 72 upon 15. So this gives us minus 12 upon 15. So this equal to minus 15 means 15 or 120. So this gives us 0.8. So minus 0.8. This is our first value. Similarly, we took the second value. So when X is equal to 93, so the standard score Z equal to 93 minus 72 upon 15. So this gives us 21, 21 upon 15. So this equal to 15 of 4. So 1.4. So this is 1.4. Or now similarly we solve the third part. So here X is equal to 72. So the standard score Z, which is 72 minus 72 upon 15 is equal to 0. So just we convert the score X to standard score Z. Now we have the question second. So find the area. Find the area under the normal curve. Under the normal curve on each. So first we have the first part is Z equal to 0 to Z is equal to 1.2. Second part is Z equal to minus 0.68 to Z is equal to 0. So for solving the or for finding the area of such type of questions, we take the help of the table. So normal table or Z table. So when we take the help of normal table, so first we do the solution. So first we represent the area and so we draw the curve. So here we have Z equal to 0 and Z equal to 1.2. So this is our 1.2. So now we are talking about this area. So this is our shaded area. So this is our shaded area. Okay. So this is our shaded area. So the area between Z is equal to 0 to Z is equal to 1.2. So Z equal to 0 to Z equal to 1.2, we can directly check the table at Z is equal to 1.2 at 0. So what is the area from the table? So we can write down as from the normal table, the area is 0.3849. 0.3849. So we can see the area. So when we
here the Z table. So this is our normal table, that is the Z table score and standard score. So here we have the curve. So 1 upon root 2 pi 0 to z e raised to power minus z square upon 2 dz. Now these are the areas. So we have a 1.2. So we have 1.2. So at 1.2, this is our area. So 0.3849. So we have written this area. Okay. So this is 0.3849. So at z equal to 0. Similarly, suppose we have the value of 0.68. So 0.68, so this is our zero point 0.6 this side, and 0.08 we consider this side, so we take the intersection value. So this is 0.2517. 0.2517. Okay, so we take the help of now. Similarly, we do the second part. So for second part, uh, z is equal to minus 0.682, z is equal to 0. So first we draw the curve. Okay, so this side is we consider as, here z is equal to minus 0.68 and here z is equal to 0. So this is our required area. This is our required area. अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एरिया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो एरिया लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही सेम राइट हैंड साइड। सपोज हियर वी टेक एज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज 0.68। तो सेम एरिया इधर कवर किया, इतना एरिया राइट साइड में भी कवर होगा। तो जब टेबल दे रखी होगी एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम किधर चेक कर लेंगे, 0 to 0.68। सो वी कैन से दैट, so this we can write down as the area between z is equal to minus 0.68 to z equal to 0 is equal to area between z equal to 0 to z equal to 0.68. So area z equal to 0 to z equal to 0.68, or we have already seen this area 0.68 equal to 0.2517. 2517 from the table. So from normal table. So we take the help. So how to check? First we check the zero point 0.6 vertically and 0.08 horizontally and take the intersection value. Take the intersection value. So this is our answer. Now we take another questions related to that. If Z is standard normal variate, standard normal variate, find the probability or area. First part is Z lie between -2 to 1. Second part, P minus infinity to -1. Third part, 2 to infinity. अगर हमने ये क्वेश्चन समझ लिए कि कैसे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सा हमारा शेडेड रीजन होगा, तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो जेड लाई बिटवीन -1, सॉरी +1, so minus infinity to +1. Okay, so we can understand these questions by
graph. So first we solve the first part. That means first part. So when we solve the first part, now we are going to calculate probability or area minus 2 to 1. So we draw the graph. When we draw the graph, z lie between minus 2 to 1. So here z is equal to 0. Z equal to 0. So minus 2 lie this side. Minus 2 lie this side. So this is z equal to minus 2 and z is equal to plus 1. Plus 1 we consider as this side. So plus 1 is this side. So this is our shaded region. Means required area from minus 2 to plus 1. So we shaded this. When we calculate the area, so this we can write down as how to calculate this area. We can calculate this area. First we are going to calculate the area from minus 2 to 0 and 0 to 1. So that is the way. So when we write down the probability, we calculate from minus 2 to 0 and the probability from 0 to 1. Okay. So now the area which cover minus 2 to 0 is equal to covered from 0 to 2. So this can be written as probability lie between 0 to 2 plus probability lie between 0 to 1. So 0 to 2 we check from the table. At 2 what is the value? So at 2 the value is 0.4772. So the value is 0.4772 and the value at 1 is 0.3413. 3413. So we add these two values. So 325 178 4711 or 34718. So this is 0.8185. 0.8185. Okay. So we take the help of the table, that table. Now, similarly, we do the second part minus infinity to minus 1. So second part, we are going to calculate the probability minus infinity to minus 1. So now, minus infinity to minus 1. So again, we draw the graph. So minus infinity means this side open area z equal to minus infinity and we consider this side z is equal to minus 1 or here z is equal to 0. So our required area is minus infinity to minus 1 means this open area. Okay, so this is this area we are going to calculate. But how to calculate this area? अब इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है तो हम बोलते हैं कि अंडर टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्या होता है. Total area under the normal curve is 1. Under the normal curve above the horizontal line that is 1. 1 वो क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों तरफ को. 0.5 आपका एलएचएस साइड में होगा, 0.5 आपका आरएचएस साइड में होगा. तभी तो हम ट्वाइस इंटू दिस कर देते हैं, ट्वाइस इंटू 0.5. तो अभी इधर हमें एरिया कैलकुलेट करना है इसका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने देखा है जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया जो है यहाँ से ये कितना है 0.5 है. तो हम क्या कर देंगे 0.5 में से 0 to -1 वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. तो वी कैन राइट डाउन दिस एज, सो दिस इक्वल टू वी कैन राइट डाउन एज 0.5. टोटल एरिया कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 0 से लेकर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक 0.5. सो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 to 0 और दिस इक्वल टू वी कैन ऐड 0.5 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं जो एरिया माइनस नेगेटिव साइड में कवर होगा उतना ही पॉजिटिव में. तो ये रिटर्न है 0 to 1. और 0 to 1 के लिए इसमें यूज किया था हमने 0.3413 उसकी वैल्यू है. तो 0.5 माइनस 0.3413. सो 0.3413. सो दिस गिव्स अस पॉइंट 1587. So 1587. So this is the
second part. Now we move to the third part. This is 2 to infinity. So third part is 2 to infinity. Third part. So we are going to calculate probability 2 to infinity. अब 2 to infinity के लिए again we draw the curve. So we are drawing the curve. So this is we consider as 2 here. So here z is equal to 0. Now we consider z equal to 2, or this side z is equal to infinity. So infinity means open area this side. So this is our shaded region. This is our shaded region which required area of this region. So how to calculate? तो सेम थिंग यहाँ भी हमें यूज करना है कि जो राइट हैंड साइड है उधर भी 0.5 टोटल एरिया रहता है। उस टोटल एरिया में से क्या करेंगे, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर भी कि 0.5 माइनस probability between 0 to 2. So this can be written as 0.5 माइनस, और 0 to 2 में क्या है एरिया हमारा, फर्स्ट पार्ट में शो किया था हमने 0.4772. So 0.4772. So this we can write down as 0.0228. So this is our answer. Last part, fourth part, we say that minus infinity to 1. So fourth part है माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो अगेन वी ड्रॉ द ग्राफ। सो अगेन वी ड्रॉ द ग्राफ। अब स्केल तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करके चेक कर लिया करना। तो यहाँ पर z इक्वल टू 1, 1 तो पॉजिटिव साइड में आएगा, ये z इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ z इक्वल टू 0 है, और z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इधर साइड में होगा। तो अब हमारा जो शेडेड एरिया होगा ये पूरा, ये एरिया शेडेड होगा यहाँ पे। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए ये एरिया हो गया हमारा, क्या करना होगा। अब हमने देखा कि लेफ्ट साइड तो पूरी कवर हो रही है, लेफ्ट साइड तो पूरी कवर हो रही है, तो 0.5 तो ये हो गया, 0.5 में अब ये ऐड कर देंगे, तो अब रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। वी कैन राइट डाउन दिस एज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0, और प्लस 0 to 1। और माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो या 0 से इन्फिनिटी हो, एक ही बात है, एरिया तो सेम ही कवर करते हैं दोनों साइड में इक्वल। तो ये कितना है, ये 0.5 है, और इसमें कितना ऐड करेंगे 0 से 1 में, 0.3413। ये कितना हो जाएगा, 0.8413। ओके। सो we take one more question related to that. So another question, x is a normal variate, x is a normal variate with mean 25 and standard deviation 5. Find the value, find the value of z1 and z2 such that a random variable x lie between 20 to 30, or this is equal to z1 to z2। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो एक्स स्कोर है उसे स्टैंडर्ड स्कोर जेड में कन्वर्ट करना है इसके लिए। तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पर हमें जो मीन दे रखा है वो म्यू, म्यू कितना दे रखा है 25, 25 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 5, और एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा फिर हमारा x1 और x2 हो जाएगा। तो हियर वी राइट डाउन z1, z1 हमें किसके लिए लिखना है, x1 के लिए। तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा फॉर z1 हो जाएगा, और फिर Z2 के लिए लिखना होगा तो वो किसे लिखेंगे हम, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो दिस कैन बी रिटन एज 20 माइनस 25 अपॉन 5, और Z2 वी राइट डाउन एज 30 माइनस 25 अपॉन 5। सो जो वैल्यूज आएंगी Z1 और Z2 की वो क्या आ जाएंगी,
ये आ जाएगी हमारी -5/5 विच इज इक्वल टू -1 और हियर this is 5/5 which is 1. So the value of z1 is -1 or z2 is +1. So we can write down that the probability p for random variable x which lie between -20 to 30 which is equal to p of -1 z lie between +1. So this is our answer. So just we convert uh, x score to standard normal score z. Now we take one more problem related to normal distribution. In a sample of 1000 students, 1000 students, the mean of certain test is 14 and standard deviation is 2.5. Assuming the distribution to be normal, so find how many students score between 12 and 15. Second, how many students score above 18. Third, how many students score below 8. Fourth, how many students score 16. So these four part we will solve here. So the problem which is given for random variable x. So for solving this problem, we convert it into the standard score z. So now we write down this as given mean mu is equal to 14, where standard deviation is 2.5. So now when we are going to solve the first part, so first part, how many students score between 12 and 15? So there are two values are given. One is 12, second is 15. So we consider x1 as 12 or x2 as 15. So according to x1, x2, we calculate the z score. So we can write down z1. So x1 minus mu upon sigma. So this equal to 12 minus 14 upon 2.5. Here we calculate Z2. Z2 equal to x2 minus mean mu upon sigma. So this equal to 15 minus 14 upon 2.5. So the value of this is -2 upon 2.5. So this gives us 25 8 the 200. So minus point 8 minus point 0.8 and the value of z2 equal to 1 upon 2.5. So this equal to 1 point sorry point 25 for the 100. So zero point 0.4. So the values of z1 and z2 are minus 0.8 to zero point 0.4. So now are going to calculate the probability between minus 0.8 to zero point 0.4. So we convert this value, x score into z score, standard score z.
Now we can calculate the probability between minus zero point 0.8 to zero point 0.4. So similarly, we draw the graph here also. So we draw the graph because this is a, आप जानते हैं कि ग्राफ इज द बेस्ट टूल टू विजुअलाइज एनी कॉन्सेप्ट. तो विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ बेस्ट भी है. तो हियर z इज इक्वल टू 0 और दिस साइड वी टेक एज z is equal to zero point 0.4. Now this side we take as z is equal to 0.8. So our required area, because we are going to calculate area between 12 to 15. So between minus zero point 0.8 to zero point 0.4. So this is our required area. So this is our. So for calculating this area, so we write down this is equal to probability P minus zero point 0.8 to 0, minus 0.8 to 0 or plus 0 to zero point 0.4. सो दिस माइनस तो नेगेटिव साइड में जो एरिया होगा वही सेम पॉजिटिव होगा. तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, दिस कैन बी रिटन एज 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड टू 0.4. अब ये टेबल से चेक कर लेंगे डायरेक्ट 0.8 पे. तो 0.8 पे जो वैल्यूज होगी हमारी टेबल से अकॉर्डिंग टू द टेबल, दिस वैल्यू इज 0.2881 और 0.4 के लिए जो वैल्यू दे रखी है, दिस वैल्यू इज 0.1554. Okay, so 0.1554. So when we add these two values, so this gives us 5, 8, 5, 13, 8, 5, 13, 114, 1, 2, 3, 4. So 0.4435. Now this is the area. Means student score lie between 12 to 15. So area is 40, 0.4435. So the number of students, when we are going to calculate the number of students lie between, okay, this area means 12 to 15. So area is this, so which equal to 0.4435 into 1000. Total student कितने थे 1000. So this is approximately 443.5. स्टूडेंट तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, we can consider as 444. 444. Okay, so this is our first part. Second part, we have how many students score above 18. So only single value is given. So for second, above 18. So here we consider x is equal to 18. So now this x we convert into the standard score, x minus mu upon sigma. So this we can add on 18 minus 14 upon 2.5. So this is 4 upon 2.5. So 4 upon 2.5. So what is the value of this? So 1.6. So 1.6. तो above 18, above 18 का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो 18 से बड़ा है. अब जब उसको जब कन्वर्ट करेंगे z में तो क्या हो जाएगा, z ग्रेटर देन 1.6. तो z ग्रेटर देन 1.6. नाउ when we draw the graph, so when we draw the graph, so we write down this as 1.6 here. So z is equal to 1.6 हमने यहाँ ले लिया, ये z इक्वल टू 0 हो गया. तो अब हमारा जो शेडेड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, वो ये पोर्शन हो गया. अब इस पोर्शन को हमें कैलकुलेट करना है. अब पोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो हमें पता है कि जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1 है, 0.5 दिस साइड है, कि 0 से लेके और ये टोटल एरिया इधर कितना होगा 0.5 होगा. तो हम क्या करना है, सेम वही थिंग. सो हम वी कैन राइट डाउन फॉर दिस z ग्रेटर देन 1.6 कैन बी रिटन एज 0.5 माइनस टोटल एरिया 0.5 होगा, 0.5 माइनस एरिया बिटवीन 0 टू 1.6. सो 0.5 माइनस और 1.6 टेबल से चेक कर लेंगे तो 1.6 पे अप्रोक्सली एरिया है 0.4452. 0.4452. सो दिस इक्वल टू 0.0548. 0.0548. तो टोटल एरिया
is 0.0548. So number of students. So as per the area, so we calculate the number of student who score above 80, above 18. So which is 0.0548 into 1000. So this is a 54.8. So equivalently 55 students are there whose score is above 18. Now we do the third part. Third part says that uh, how many students score below 8. जैसे हमने ग्रेटर के लिए किया है, एबव के लिए ऐसे बिलो के लिए कर देंगे। तो x क्या हो गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 8। नाउ z की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो दिस इज 8 माइनस 14 अपॉन 2.5। तो ये कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 2.5। सो दिस वी कैन कैलकुलेट एज, so this equal to 25 to the 50, so approximately -2.4. So -2.4. So now we draw the, so we write down this as -2.4 at this side. So z is equal to -2.4. Here z is equal to 0. So below this, so we have the required area. This is the required area. Okay, so we write down the value of x less than 8. So means probability P, z is less than -2.4. So 2.4. So this area same with same thing. So is जो left hand side में भी total area यहाँ से क्या होगा, z equal to 0 to this side up to minus infinity. So this is also equal to zero point 0.5. So zero point 0.5 minus zero point 0.5 minus area. So that means point 2 point. So this is minus 2.4 to z to 0. So this can be written as zero point 0.5 minus area. We calculate as 2.4, और 2.4 we can check directly from the table. और टेबल से चेक करेंगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.4918. So the value of this is 0.4918. So this equal to 0.0082. 0.0082. So the number of students which equal to 0.0082 into 1000, approximately 8.2, means 8 students whose score is below 8. Now last part is हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 16। अब देखिए हमने बिटवीन वाला क्वेश्चन कर दिया पहला पार्ट, एबव वाला कर दिया, बिलो वाला कर दिया। अब कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 16। अब हाउ मेनी, तो दिस इज फोर्थ पार्ट। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 16। अब ये कह रहा है एग्जैक्ट 16। अब एग्जैक्ट 16 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं एरिया में, बिकॉज एरिया नीड्स इंटरवल, एरिया नीड्स इंटरवल। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अब यहाँ पे x इक्वल टू इसने 16 तो दे दिया, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू जेड स्कोर ऑल्सो। तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो 16 माइनस 14 अपॉन 2.5, सो दिस इज 2 अपॉन 2.5। तो दिस इज इक्वल टू 0.8। तो 0.8। अब जब आप इस 0.8 को प्लॉट करोगे, 0.8, तो 0.8 सपोज किया हमने, यहाँ आ रहा है जेड इक्वल टू 0.8। अब जो हियर जेड इक्वल टू 0, अब एग्जैक्ट के लिए हमें सॉल्व करना है, तो एग्जैक्ट के लिए सॉल्व करना है तो ये क्या हो गया, हमारे एक पॉइंट हो गया। अब पॉइंट का कोई एरिया होगा, पॉइंट कंटेन एनी एरिया, नो। क्योंकि जब भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि स्मॉल इंटरवल होना चाहिए। जब हम बिड्थ वगैरह, लेंथ और बिड्थ स्मॉल स्ट्रिप डालते हैं, तो स्ट्रिप के लिए ओके, तो वी हैव द इंटीग्रेशन मीन्स वी हैव सम लिमिट्स, मीन सपोज x1 to x2 fx dx, so we have some interval. Okay, we are going to calculate the area between x1 to x2, so we do not calculate the area of any point.
So that's why we will solve this problem by using some interval, by taking some interval. So this is not a way to solve this problem. So when x equal to 16, so we take a small interval. So a small interval, we take this interval is 15.5 to x2 is equal to 16.5. Okay, so we write down the values of z, that means z1. So 15.5 minus 14 upon 2.5. So this is 1.5 upon 2.5. So this is zero point 0.6. And for Z2, 16.5 minus 14 upon 2.5. So this gives us 2.5 upon 2.5 is equal to 1. Okay. So now we draw this. So So this is our zero point 0.6, or here we take as 0.1. So z is equal to 0.6 or z is equal to 1. So we are going to calculate this area. Okay, because we have some interval. So now probability of 0.6 to 1. So 0.6 to 1. So we can write down this as, so we can calculate the probability 0 to 1 minus probability 0 to 0.6. So point 0 to 1, 0 to 1 is 0.3413, and between zero point 0.6, 0 to 0.6, 0 to 0.6, we have a written. We can take the help of the table. 0.6, 0.6, 0.6. So 0.6 is 0.2257. So 0.2257. So this is 0.2257 into 257. So 13 minus 7, 6, 10, 5, 1, 1. So 0.1156. So the number of students, this is equal to 0.1156 into 1000 equal to 115.6, equal to 160. Hope you understand.